Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. So, good morning and welcome everyone again. We are here for a very special filmmaking lecture wherein we might learn about what all trends are now coming up in filmmaking, what all job opportunities you might have in filmmaking. And for this, we have among us Virendra Valsangkar, sir. I welcome you, sir. Thank you for coming. And before we start, I will quickly ask Anand sir to, just give a brief introduction about you so that our students understand everything about you before starting. Thank you. Hello, sir. Very good morning, and very good morning to all the students. So I will just introduce him to you. If you don't know, some people may know about him, but anyway, I will introduce about his bio. So Virendra Valsangkar, sir, a graduated civil engineer, turned to a filmmaking out of passion for the medium. Received a national award for Vishnupant Damle, the unsung hero of talkies, as best biographical or historical reconstruction film in 2012. Okay, I have seen this film. This is actually a very good portrayal of the character, and that is something which I really interested. I got into the film, and he has actually done a tremendous directing way, and I really love that film so much. Uh, he started his career by working with Sumitra Bave and Sunil Subtankar. As a director, he directed short fiction TV programs for ETV and certain documentaries on various subjects, including Forts of Maharashtra, the Place, The Unfolding White, The Chi Kaka, and series of documentaries about the tribes of Maharashtra. If I have pronounced it wrong, please correct me, sir, because I am not from Maharashtra. Okay. He made a few documentaries for educational social institutions and corporations for Mahiko, TNG, IPA, BAIF, Mahafeed, etc. Also worked as an editor for the National Award-winning Marathi feature film Devrai, The Sacred Crow, and Ha Maharat Masa, which means India is my country. Received International Jury Award for The Unfolding White in Ekotop Film Festival, Slovakia. Alongside the industry experience, he also had more than 10 years of academic experience. Wow. He is associated with various education institutions as faculty for filmmaking. And above all, I have actually worked with him. I got that opportunity to work with him. He's actually a great human being and a very good person to work with. And I had a very good time with you, sir. Yeah. So now you can start your session. And students, if you have any questions while he is actually taking the session, you can just put that in the chat box. After the entire session, definitely there will be a questionnaire session after that. And anything, any questions regarding the syllabus or anything regarding that, we can just postpone it after this, like after the session, related to syllabus, structure, fees, all those kind of things, so that we don't disturb these kind of things to sir. Okay. Thank you, sir. Now you can start. Thank you, Anand sir. And before I start my session, I would like to convey my thanks to TMB for inviting me for this session, and thanks to Anand sir to coordinate the invitation with me for this particular webinar. Yeah. So, Anand sir, thank you for the introduction. So let's start the session. Today, I would like to talk to you, as it is already said, that we will be discussing about what are the different opportunities and what are the different trends in filmmaking. So first of all, we need to understand, how the entire various domains under filmmaking are, and what we can do in the industry, and how we can take the advantage of whatever situation we are in right now. So let's start to understand the entire
industry scenario in a brief way so that we will have a overall a complete overview about the subject about films. So when we say films, so basically whenever a student want to get admission into filmmaking, they have certain conditioning, certain ideas about films, what films are and what films could be, and accordingly they expect something in the course and they expect something to work in the industry in a certain fashion. So before we start our career, we should know a brief introduction about the film industry and the possible opportunities. So if we talk about films in India or in abroad, what happens is generally most of us are familiar with the films which are running in theaters. Maybe the super hit Bollywood films, sometimes the Hollywood films, and most of us must be knowing few actors, directors, some of the crew members. Maybe somebody must be having a fan following towards a particular, maybe a director or a music composer or something like that. And we have a very kind of limited exposure about it. So first of all, we need to broaden our exposure about films to understand entire the scenario in film industry. So here is something which uh, I have prepared to talk to you regarding this subject. So I'm starting a presentation and I'll be showing you certain things and we will be discussing about it. Yeah. I hope you can see my screen. I will make it full screen. Oh, instead, wait a minute. I hope you can see my screen now. So Yes, sir. yeah. So if we talk about films, let's try to understand that overall industry, film industry, started working in a particular fashion. Like here is one of the example, like Mughal Azam. I'm just talking that most of the films which were made in India or in various countries. In India also we have various centers of making films. I mean, all started in uh, various centers in India. Like there was a center in Mumbai, which was called as Bombay, then Kolkata, then Madras, and there everywhere we can see that most of the films were being made based on some historical stories or the uh, we can say mythological stories. So mythological stories, and so film means what? Most of the people were having some assumption that we will be watching some historical story, or maybe we will be watching some kind of a this mythological story. That was in a way assumption, and people were enjoying that. Definitely it all started with silent, and afterwards people started watching talkie films also. It's a complete history, but here we will limit ourselves and we will just try to understand that most of the films were being made about the historical stories or the mythological stories.
Of course, there were some, I would say, exceptions, and some people were definitely working on the stories which were having a social relevance as well. So here is one of the example. So some people started making the films which were having some kind of a social relevance. So सिर्फ मतलब मनोरंजन के लिए नहीं, सिर्फ हिस्टोरिकल कुछ स्टोरी बताने के लिए नहीं. Because the earlier when we talked about this, uh, yeah, it was mainly sometimes a love story, or maybe a kind of story which will be having some kind of a mythological involvement, like maybe the story of gods and goddesses or saints, something like that. So there actually most of the time entertainment used to be the primary objective. तो लोगों को मजा आ जाए, लोगों को मनोरंजन हो जाए, ये उनका बेसिक मोटिव था. ऑफ कोर्स स्टोरी जो बताई जा रही थी, वो स्टोरी वाज बेसिकली inspired or taken from some historical event. But afterwards, there was a trend of films which are also relevant in a social level. तो ये मैं एग्जांपल जानबूझ के दिखा रहा हूँ मदर इंडिया का, बिकॉज बिकॉज क्या है कि of course we will be talking about some people who really did the great experimentation. And why I'm talking all these things, because I want to stress that when we talk about this, the trends in films, we need to understand कि trends हम किसको बोलेंगे, or what kind of trends we already had, and how we can take it from here. So we can definitely learn a lot from the past stories. So that's what the relevance I want to bring to your notice. तो ये जो मदर इंडिया जैसी फिल्म है जहाँ पे सोशल रिलेवेंस बताया गया, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 1947 को हम जब इंडिपेंडेंट हुए, वहां पे एक दौर चला, मे बी a decade, maybe 10 years, 15 years time, जहाँ पे lot of patriotic films were being made, because it was a very new concept. People were zapped with the concept that we are free now, we can talk about our patriotism, we can say that India is my country, उसमें कोई ब्रिटिश आके हमको पकड़ के नहीं लेके जाएगा. So they were very thrilled with the thing that we can definitely make patriotic films and openly we can screen it to the people, and people were really zapped with this concept. And तो ये नया ट्रेंड आ गया जिसमें patriotic, socially relevant films ये सब बन रही थी. So इसमें ये एक एग्जांपल है मदर इंडिया जैसे. These are just the examples and we need to understand कि ट्रेंड्स कैसे बन रही थी. So here I'm again with this. इसमें से कुछ फिल्में आपने देखी होगी या कुछ फिल्मों के बारे में कुछ सुना होगा. Maybe you have heard some stories about it, कि ये ऐसी कुछ फिल्म आई थी जिसके बारे में काफी चर्चा चली थी, इसके गाने पॉपुलर हो गए थे, या फिर इसकी ऑस्कर में भी चर्चा हो गई थी. दिस वाज द फिल्म व्हिच वाज सेंट टू ऑस्कर, वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये कुछ आपने सुना होगा डेफिनेटली. तो ये कैसे चेंज हो रहा था, यू कैन सी कि हम कहाँ से कहाँ कैसे शिफ्ट होते हुए जा रहे थे, कि हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज से फिर हम सोशली रेलेवेंट फिल्म बना रहे थे. नाउ आई एम टॉकिंग specifically about the Indian films. इसमें ऐसे लोग भी थे कुछ, गुरुदत्त जैसे. आपने I don't know whether you have seen or heard about Tessa, but there were a few people who were experimenting a lot. अब ये एक्सपेरिमेंटेशन क्या हो रहा था, and we need to understand here कि आज के वेबिनार में ये मैं जानबूझ के इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जो फिल्म मेकर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स में एक रिबेल पहले से तैयार होता ही है.
एंड वो रिबेल क्या है? रिबेल ये है कि नया ट्रेंड सेट करने का, टू एक्सप्लोर द फिल्म लैंग्वेज फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और प्यासा जैसी फिल्में में हमको वो दिखता है। सो व्हेन गुरुदत्त वाज यूजिंग लाइट इन अ वेरी डिफरेंट लाइटिंग, उसके सीन का डिफरेंट तरीके से हो रहा था। जो स्टोरी बताई जा रही थी वो अलग तरीके से बताई जा रही थी। ये जो एक पूरा माहौल था पैट्रियोटिक फिल्म्स का, उससे बिल्कुल अलग तरीके का इस फिल्म का विषय भी था। सो लॉट ऑफ dark shade of life was shown, a lot of pessimism was also shown। तो ये बिल्कुल हटके अलग लेवल पे काम करने वाले कुछ लोग थे। सो यहाँ पे हमको वो अंडरलाइन करना चाहता हूँ मैं कि जो फिल्में आम तौर पे बनती है, मैक्सिमम मेजॉरिटी में बनती है, वो एक चेहरा होता है इंडस्ट्री का हमारे लिए या फिर लोगों के लिए। बट वो सिर्फ एक ही चेहरा नहीं होता, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आर हैपनिंग। तो व्हेन वी टॉक अबाउट गुरुदत्त, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गुरुदत्त एक अलग लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहा था। गुरुदत्त एक जस्ट एग्जांपल है, देयर आर अदर पीपल आल्सो। सो ये सब सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी नीड टू नो कि व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेंड्स, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता था, और क्या हम आगे जाके कर सकते हैं। ऐसे ही जो जिनका नाम काफी प्राउडली लिया जाता है, वो है सत्यजीत रे। दिस इज जस्ट अ पोस्टर ऑफ पथेर पांचाली। एंड व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी टॉक्ड अबाउट कि सोशली रेलेवेंट फिल्म्स बना रहे थे कुछ लोग डेफिनेटली, एंड एक एक्सपेरिमेंटेशन भी चल रहा था कुछ लोगों के द्वारा। एंड यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटेशन बना वो और भी अलग लेवल का था, विच इज कॉल्ड एज रियलिस्टिक फिल्म्स, जो कि आगे चल के एक मूवमेंट बनी, एक कंप्लीट, जिसको बोलते हैं कि इंडियन पैरेलल फिल्म मूवमेंट। तो जो फिल्म इंडस्ट्री का, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो चेहरा था वो पूरी तरह से बदल गया। वी हैड अ कंप्लीट पैरेलल इंडस्ट्री विच वाज रनिंग। तो वहां पे चाहे देवानंद की फिल्में आ रही हो, लेकिन यहाँ पे सत्यजीत रे की भी फिल्में आ रही थी। Of course the budget was less, of course the money involved was less, of course the glamour involved was less, but less and more की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अलग रास्ता ढूंढने की बात है। यहाँ पे है अलग रास्ता ढूंढने की और अलग तरीके से अलग नया ट्रेंड बनाने की। और ये ट्रेंड सिर्फ यहाँ पे नहीं बना। जब आप कोर्स में सीखेंगे या फिर आपको और भी फिल्में देखने का मौका मिलेगा, कब आपको और भी पता चलेगा, या फिर एक्सप्लोरेशन में आपको और भी पता चल जाएगा कि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा था, पूरी दुनिया में हो रहा था। रादर दुनिया में हो रहा था इसीलिए यहाँ पे भी हो रहा था। दिस all connecting to each other, this is all in a way having a lot of influence। जिनको एक्सपोजर मिला था, राय जैसे लोगों को एक्सपोजर मिला था इटालियन सिनेमा का, बाइसिकल थीव जैसे फिल्म्स का, उन्होंने वो देखा था और इसीलिए वो ये नया थॉट लेके इंडिया में काम करने लगे थे। सो अगर हम देखते हैं तो कितने अलग अलग लेवल पे ट्रेंड्स बनाने की लोगों ने कोशिश की है, और कितने अलग अलग तरीके से लोगों ने काम करने की कोशिश की है। और ये सारा काम कोई अकेला आदमी नहीं करता है कभी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिल्म्स लाइक पथेर पांचाली, तो पथेर पांचाली एक नहीं होती है, सत्यजीत रे एक नहीं होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, एंड हु आर दे? तो उनका सिनेमाटोग्राफर था, उनका साउंड रिकॉर्डिस्ट था, उनका एडिटर था, उनके एक्टर्स थे, उनके असिस्टेंट्स थे, जो आगे चल के इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स बने। अगर आप इफ यू जस्ट सर्च हु वेर वर्किंग एज एन असिस्टेंट टू सत्यजीत रे, तो आप चौंक जाएंगे, आपको बहुत मजा आने लगेगा।
and a lot of people actually worked with him, जिन्होंने आगे चल के बहुत अलग अलग काम किया है एंड अपने अपने रोड से गए हैं. सो डेफिनेटली यू कैन चूज योर पाथ, यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर योर रोड. एंड फिल्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि यू हैव टू चूज योर ओन रोड. एंड आपको किस तरह की फिल्मों में काम करना है, किस तरह का इंडस्ट्री एक्सपोजर लेना है, वो आप पे है डेफिनेटली. बुरा भला इसमें मैं कभी नहीं जाऊंगा, यहाँ पे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा. आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट सर्टेन थिंग्स. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरा है या अच्छा है, ऐसी कुछ मैं बात कर रहा हूँ. लोगों को कभी कभी मतलब स्पेशली विद द स्टूडेंट्स ये एक तैयार हो जाता है वहम. If somebody is not getting Hindi, तो please let me know in the chat box. So I will stick up completely to English. And if Hindi and English combination is working for you, please let me know. तो जैसे मैंने बोला कि सत्यजीत रे अकेले नहीं है, या फिर उनका मतलब आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट हिज टीम, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल हु वर वर्किंग इन दैट ईरा. तो उनके साथ साथ काम वर्क करने वाले बाकी जो फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने भी ये पूरा एक मोमेंटम तैयार किया था, मोमेंटम जागरूक किया था. एंड जैसे मैंने बोला कि ये पूरे दुनिया में हो रहा था. सो द सेम थिंग वाज हैपनिंग इन इटाली, which is actually the beginning point we can say. वहां से फ्रांस, जो फ्रेंच न्यू वेव कहलाती है, एंड इंडिया में हम उसको बोलते हैं इंडियन पैरेलल फिल्म मूवमेंट. वैसे ही जापान में भी हुआ, जिसको बोला जाता है जापानीज न्यू वेव, या फिर जिसको हॉलीवुड में भी अलग तरीके से अडॉप्ट किया गया, एंड जिसको बोला जाता है फिल्म नोवार. तो हर एक रीजन में, हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है. एक ही तरीके का नहीं है एक्सपेरिमेंटेशन. मतलब कि वहां पे इटली में हुआ तो ऐसा ही ट्रेंड यहाँ पे नहीं आया. वहां से कुछ इन्फ्लुएंस होके आया, वहां से कुछ लेके आया, लेकिन यहाँ पे अपना नया कुछ बनाने का ट्रेंड निकल गया. एंड ये जो ट्रेंड सेटर्स थे, वो ट्रेंड सेटर्स, ये अभी समझने वाली बात है कि ये जो ट्रेंड सेटर्स थे, वो ट्रेंड सेटर्स को जो एस्टैब्लिश्ड स्टूडियोज थे, वो डायरेक्टली किसी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे थे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना खुद का रास्ता बनाया. they actually paved their own path, and this is really important. So जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, जो ट्रेंड्स लेके आते हैं, उनको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है. एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि या देयर विल बी सम ऑफ यू जिनको अभी जो फलाना 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 फिल्म्स बन रही है, उनके साथ काम करना है. यस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू एंटर इनटू दैट रेस. एक रेस है, ये मल्टीनेशनल या फिर बड़े कॉर्पोरेट्स में आपका अगर आप हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि आप किसी तरीके से काम करके थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस लेके आप वायाकॉम जैसे कंपनी में काम करते हैं, या फिर जी जैसे कंपनी में काम करते हैं, या फिर और किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, then you will definitely earn your living, and you will definitely go on the path कि जहाँ पे शायद आप उस कंपनी के साथ जाके कुछ अपना रोल निभाएंगे, जो भी आपका रोल हो. चाहे आप एडिटर हो बन गए हो, या आप साउंड रिकॉर्डिस्ट बन गए हो, या फिर आप फिल्म मेकर एज अ डायरेक्टर बन गए हो, या एज अ प्रोड्यूसर बन गए हो, या फिर आप एज अ राइटर काम कर रहे हो. सो देयर आर डेफिनेटली वेरियस रोल्स इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट. तो आप वहां पे भी जाके काम कर सकते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां पे ट्रेन किस तरह का है, फिर वहां पे किस तरह का काम होता है, और वो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं क्या. या फिर देयर विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड, जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, विच वी कॉल एज टेलीविजन.
तो टेलीविजन का अपना अलग अलग दुनिया है। टेलीविजन की सीरियल्स किस प्रकार के बनते हैं, किस प्रकार का कंटेंट वहां पे बनता है आज की भाषा में, या फिर किस प्रकार का किस प्रकार का रोल आप वहां पे निभा सकते हो, बिकॉज देयर विल बी वेरी डिफरेंट रोल्स। फिल्म में जाएंगे तो देयर विल बी वेरी डिफरेंट रोल्स, एंड यहाँ पे जाएंगे तो रोल्स बहुत बदल जाते हैं, because there will be some people who will be only keeping an eye on the creative side of the entire production. They will be working from the channel side, they will be working from the production house side, and there will be definitely various positions on which you can work. And ये करने के लिए आपके पास फिल्म मेकिंग का एक प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, then only you can work at that level. क्योंकि when you know about certain things, then only you can take the decision about it. Maybe you are not a film director, but you will be creative producer. Maybe you will be maybe you will be executive producer for them. Maybe you will be some strategic decision maker for them. So there will be various levels in which you can contribute. So you could be one of the technician as an editor. Maybe you will be working as a sound designer, maybe you will be working as a sound recordist, maybe you will be working as a script writer, maybe you will be working as the lyricist. जो भी आपका इंक्लिनेशन हो, जो भी आपका जिस दिशा में आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट हो सकता है या फिर आपको ज्यादा मजा आ सकता है, मे बी that path can be chosen. All right, so taking this discussion ahead, और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट। सो ये पूरी दुनिया में हो रहा था, जैसे मैंने बोला। ये बाइसिकल थीफ जो है वो, दिस इज अ फिल्म मेड इन Italian language, and similarly I said that there was a movement in Italy, there was a movement in France also. तो फ्रांस में बहुत अलग तरीके का काम हुआ बाद में, ऑफ कोर्स इटली के बाद हुआ, पहले इटली में हुआ, उसके बाद फ्रांस में हुआ। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ब्रेथलेस गोदार्ड, जिसका नाम लिया जाता है काफी। नाउ these guys were ट्रेंड सेटर्स। यहाँ पे और एक ब्रेथलेस का ये है। अब ट्रेंड सेटिंग क्या है उसमें, वो फिल्म्स कैसे अलग थे, क्या उन्होंने अलग किया, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा, एंड ये काफी कुछ स्टडी करने लायक है। So there are lot of material to read about it, lot of films to watch, and need to understand कि ये गोदार्ड ने क्या exactly अलग से किया, या फिर इन लोगों ने क्या अलग से किया। So आपको इटालियन चाहे या फ्रेंच हो फिल्म्स, इसका अगर आप एक्सपोजर लेते हैं तो आपको पता चलेगा। अब आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि when we talk about फ्रेंच एंड टॉक अबाउट इटालियन, एंड वहां पे जो ट्रेंड सेटर्स थे और वहां पे क्या हो रहा था, वैसे ही इंडिया में भी हो रहा था। एंड ये एक्सपेरिमेंटेशन का जो बैकग्राउंड है, दैट बैकग्राउंड एक्चुअली gave a birth to the new generation filmmakers. We need to understand this. देवडी का एक्सपेरिमेंटेशन ऐसे ही बन के नहीं आया। जब अनुराग कश्यप इतना एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाता है, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन ऐसे ही नया ट्रेंड इतना इजीली नहीं बन के आया। उसके पीछे ये सब कॉन्टेक्स्ट है, ये सब कॉन्टेक्स्ट है पीछे। सो पीछे बहुत लोगों ने काम किया है और इसलिए उनको अलग दिशा में काम करने की एक इंस्पिरेशन मिली, एंड दे एक्सप्लोर्ड कि फिल्म लैंग्वेज किस तरह से यूज की जा सकती है, व्हाट डिफरेंट थिंग्स कैन बी डन इन दैट, एंड इसलिए वो अपने फिल्म में अलग लेवल का एक्सपेरिमेंटेशन कर पाए। Now this experimentation, now I'm talking about very recent times.
रिसेंट क्यों बोल रहा हूँ, मतलब देवड़ी कुछ लोग बोलेंगे उसको तो काफी साल हो गए, हाँ काफी, मतलब तो भी रिसेंट है, राइट. एंड इफ वी लुक एट दिस, तो देवड़ी अकेला नहीं है, देर आर सम अदर पीपल एंड अदर थिंग्स विच आर हैपनिंग. तो शायद आपको लगेगा कि ये मैं हिंदी का दिखा रहा हूँ ओमकारा, और नहीं, ये सारी लैंग्वेजेस में हुआ. ये सारी लैंग्वेजेस में लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन किया है. दे टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस प्लेसेस. डेफिनेटली they studied cinema, they experimented a lot, and they 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 became the trendsetters, new trendsetters. तो ये है एक मलयालम फिल्म चोला. दिस इज जस्ट अ एग्जांपल. बट सनल कुमार की फिल्में अनंत सर भी एग्री करेंगे शायद, उनके बाद में अगर उनका कमेंट सुनने के लिए मैं तैयार हूँ. So I'll be happy to receive his comments. But Sanal Kumar made films in a very different way. He explored the cinematic language in a different way. So he became a trendsetter in a way. So you can create your trends. ये चोला का और एक ये है पोस्टर है. Of course, these films are now where these films are available. These films are available on OTT as well. When we talk about trends, OTT became a new trend setter. OTT क्या लेके आया है, तो जैसे चोला जैसी फिल्में हैं या फिर और भी बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल फिल्में हैं जिसको इतने दिन से थिएटर पे रिलीज करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, उसके लिए आज हमारे पास OTT जैसा एक ऑप्शन है. So there are lot of platforms which are working, like call it a Netflix, MX Player, Amazon, या फिर Woot या फिर anything. And all these platforms have their own identities, different identities, and they are coming up with various different type of content. And जो फिल्में शायद पहले थिएटर में रिलीज नहीं हो पा रही थी, those films also got a chance to get released on the OTT. And चोला तो एक एग्जांपल है, बट यू मस्ट हैव सीन सम फिल्म्स. आई एम श्योर कि आप अगर फिल्म्स में इंटरेस्टेड है तो आपने OTT पे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर किया ही होगा. हमेशा याद रखिएगा कि जो OTTs है, अगेन आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट वन इम्पोर्टेंट पॉइंट. जो OTTs है वो सारे OTTs कौन है? बड़े बड़े प्लेयर्स है. नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, हाँ, और उसमें भी रिवोल्ट करने वाले लोग हैं. मतलब कि जिनकी फिल्में आज OTT पे नहीं जा रही है, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि नया ट्रेंड सेट करने की चक्कर में है. एंड सो देयर कुड बी न्यू ट्रेंड सेटर्स एज वेल. तो ऐसे नहीं है कि मतलब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, शायद ये काफी कुछ लोगों ने सुना भी होगा. द ग्रेट इंडियन किचन करके एक वो फिल्म आई थी, उसकी काफी चर्चा रही लोगों में, लोगों ने उस पर काफी डिस्कस भी किया. एक जस्ट आपको एक फैक्ट बताता हूँ, दैट फिल्म वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय अमेजोन और नेटफ्लिक्स इन द अर्लियर टाइम. रिजेक्ट कर दी थी फिल्में. तो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो रिजेक्ट करते ही रहते हैं चीजों को, बट उन्होंने एक छोटे प्लेटफॉर्म पे रिलीज की, एंड वहां की पॉपुलैरिटी देख के फिर बड़े प्लेटफॉर्म को वो लेना पड़े फिल्म. दे हैव टू टेक द फिल्म. तो ये बात हो गई. सो when we talk about the trends, तो think as even you can start a new trend. Talking about the existing trend ये है कि थिएटर्स अभी खुली नहीं है, तो OTT पे it's not only about creating the new shows. OTT नए शोज तो तैयार कर ही रही है, जैसे कि Amazon ओरिजिनल करके आता है, Netflix ओरिजिनल करके आता है. सो नए ओरिजिनल मतलब एक्सक्लूसिव शोज वहां पे आ रहे हैं. बट वो सिर्फ वही नहीं है, दे आर ऑल्सो बाइंग नाउ द कंटेंट फॉर द शॉर्ट फॉर्मेट.
तो जो शॉर्ट फिल्म्स हैं 15 मिनट की, 20 मिनट की, ये भी अभी एक्सप्लोर हो रहा है डोमेन। सो अगर ऐसे कुछ नहीं है कि, तो जैसे हम बोलते हैं कि फिल्म्स, तो हमको लगता है कि फिल्म्स मतलब क्या है, 2 घंटे की फिल्म। जरूरी नहीं है। आप 15 मिनट की कुछ जबरदस्त फिल्म बनाओ and that can be bought by any of these OTTs. That's possible, very much possible. I mean, definitely there are other options, like maybe you must have seen a lot of short films on YouTube and all, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म्स है। बट वो फ्री प्लेटफॉर्म छोड़ के भी बाकी बहुत सारे ऑप्शंस निकल रहे हैं अभी, जहाँ पे आप आपकी छोटी सी फिल्म भी दिखा सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट विद दिस। तो अपॉर्चुनिटीज और कहाँ पे है? आई एम जस्ट sharing the screen again to show you something. So we talked about all these की regional films में भी जितना experimentation है and all these things. ये और एक एग्जांपल मराठी में जो एक्सपेरिमेंटेशन या फिर नया ट्रेंड जो है रियलिज्म का, उसमें काफी फिल्में बनी। विहिर जैसी भी फिल्म है या फिर टिंगिया जैसी फिल्म है, जिनको काफी इंटरनेशनली नेशनली एक्लेम किया गया, उनको काफी अवार्ड्स मिली। वो थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी टिंगिया जैसी फिल्म काफी सक्सेसफुल रही। सो अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर पीपल हु आर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट, जैसे कि मसान जैसी फिल्म है जो कि अब्रॉड भी काफी क्लिक हुई। यहाँ पे तो हुई हुई डेफिनेटली। आपने आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये फिल्म देखी होगी एंड ये जो नए ट्रेंड्स में लोग काम कर रहे हैं वो देखा होगा। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट फिल्म्स एज वेल। नाउ दिस इज एग्जांपल पावसाचा निबंध। There are a lot of short films which are being made. This is just one of the example because you know the name. नागराज मंजुळे, आपने नाम सुना है शायद, and everyone knows about his work and his career. But about कि जब सैराट जैसी फिल्म हिट हुई उसके बाद भी उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई पावसाचा निबंध करके, which won a national award also, and which is making very much waves in the circuit. तो ये भी पॉसिबल है कि आप शॉर्ट फिल्म्स में अपना काम करेंगे और वो शायद OTT पे भी जाएगा। ये भी एक नया ट्रेंड है। लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स आर बीइंग एक्वायर्ड बाय OTTs, वेरियस OTTs। बहुत OTTs हैं जो कि शॉर्ट फॉर्मेट चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट खरीदना चाहते हैं। अदर देन दैट देर आर लॉट ऑफ कंपनीज, वेबसाइट्स विच नीड ऑडियो विजुअल मटेरियल, जैसे कि कॉर्पोरेट फिल्म्स है। तो कॉर्पोरेट फिल्म्स में हर एक कंपनी अपनी अपने काम के लिए कुछ प्रकार की फिल्में चाहती है। हाँ, कुछ है कि जो कंपनी की इंफॉर्मेशन देती है, कुछ है कि वो उनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती है। सो ट्रेनिंग वीडियोस हो सकते हैं, उनकी कॉर्पोरेट फिल्म्स हो सकते हैं, ब्रांडिंग फिल्म्स हो सकते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स हो सकती है। सो देर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कंटेंट बाय वेरियस कंपनीज, कॉर्पोरेट्स। तो ये बिगिनर्स के लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि फिल्म मेकिंग में अभी भी नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। दे कैन डेफिनेटली वर्क देयर आल्सो। या फिर देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज व्हिच आर बीइंग मेड इन द इन इंडिया, अब्रॉड। आप कहीं पे भी जाके भी देखो तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनती है। यहाँ पे तो कुछ एग्जांपल्स हैं ये भी शायद कुछ एग्जांपल्स आपको मालूम होंगे, जैसे कि सचिन वाला एग्जांपल आपको मालूम होगा, बट आई डोंट नो कि सेकंड पिक्चर है वो कितने लोगों को मालूम होगा। ये फिल्म है, एक डॉक्यूमेंट्री मेकर थे जिनका नाम था सुखदेव, और सुखदेव के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी, सुखदेव तो गुजर गए काफी पहले, तो उनकी बेटी ने, शबनम सुखदेव, उन्होंने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसको कि नेशनल अवार्ड भी है। एंड दैट डॉक्यूमेंट्री इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है आखिरी सलाम, या फिर इंग्लिश में उसका नाम है, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम,
तो आखिरी सलाम नाम का हिंदी उसका टाइटल है। एंड ये शबनम सुखदेव ने बनाया है। ये थर्ड जो है, ये थर्ड है, वो तो बहुत ही अजब स्टोरी है। दिस डॉक्यूमेंट्री इज कॉल्ड एज मालेगांव का सुपरमैन। तो मालेगांव का सुपरमैन ये एक बहुत अजीब स्टोरी है, जो कि शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम, उसके बारे में बिल्कुल ही मालूम नहीं होगा। Yeah, definitely there is a question and I'm going to take the questions definitely, but let us complete this talk and definitely I will answer your question. Just a minute, give me 1 minute. Yeah. I was just searching the name of the film जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। So उसका, हाँ, उसका नाम है द लास्ट अडियो। ओके, सो आखिरी सलाम जिसका हिंदी में टाइटल है, उसका इंग्लिश में नाम है द लास्ट अडियो। तो ये जो 3 आपको दिख रहे थे, उसमें से एक था आखिरी सलाम, मतलब लास्ट अडियो, एक था सचिन। तो सचिन जैसी फिल्म है जो कि स्टार पे बनी है डेफिनेटली, तो वो थिएटर रिलीज उसका पॉसिबल हुआ। बट बाकी 2 फिल्मों का थिएटर रिलीज उस तरह से नहीं हुआ। मालेगांव का सुपरमैन थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका, बट वो जो एक पीवीआर का एक सेक्शन आता है उसमें रिलीज हुआ वो। दैट मालेगांव का सुपरमैन इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री। you can search for it and if possible please watch the documentary. तो डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर है कि आपको मालूम नहीं होगा तो मैं क्विकली आपको बहुत मजेदार चीज बताता हूँ। मालेगांव नाम का एक छोटा सा टाउन है महाराष्ट्र में, एंड उस मालेगांव में कुछ लोगों के दिमाग में आया कि हम भी फिल्म बनाते हैं, एंड दे started working. They had some kind of experience of working with video cameras, and they came up with the idea, they came up with the story, and they actually made their first film, and they wanted to make some action oriented films, जैसे कि मतलब कि हॉलीवुड टाइप। they wanted to make that kind of a stuff, and they made that film, and those films, मतलब एक पहली फिल्म बनी which was released in their area, Malegaon area, and which was a super hit. And after that they made a lot of films like that. All were having very less budget, all were made with a very constrained infrastructure, and it was released in that circuit. तो ये कुछ चीजें थी, and they actually created their own industry, own film industry. मालेगांव की अपनी फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने बनाई। So this was really incredible. And ये जो डॉक्यूमेंट्री है मालेगांव का सुपरमैन, this particular documentary is about a person who played role of Superman in Malegaon's सुपरमैन फिल्म। तो मालेगांव की अपनी एक सुपरमैन की फिल्म बनी थी, और उसमें जिसने एक्ट किया था, द डॉक्यूमेंट्री इज अबाउट दैट। So it's a very interesting documentary which talks about this entire Malegaon industry and the things about that. Okay, since there are, I mean, questions coming up, so मैं 2 questions यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं डेफिनेटली दोनों के जवाब दूंगा, बट आई थिंक कि शायद आनंद सर के पास और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो साथ में सभी का जवाब देंगे। I will quickly talk about these 2. Okay. Do you feel COVID has proved a boom for OTT and resulted in shutting PVR business? या कुछ हद तक बिल्कुल सही है। तो ये बहुत सारे बिजनेसेस के साथ हुआ है कि कोविड एक्चुअली चेंज द एंटायर ट्रेंड।
तो when we are talking about trends, तो इसलिए मैंने ये पहले वाला पूरा क्यों दिखाया, क्योंकि we need to understand what is trend and how that can be set and how people worked in that direction. तो OTT काफी बूम में आ गई because people had no other option. थिएटर्स बंद है, उनको कंटेंट देखना तो था, फिल्म लवर्स तो है और उनको फिल्में तो देखनी थी, सो दे एक्चुअली ऑप्टेड फॉर ओटीटी. एंड ओटीटी का बूम डेफिनेटली कोविड के टाइम पीरियड में डेफिनेटली उसका बूम बहुत ज्यादा हो गया है. टॉकिंग अबाउट पीवीआर एंड द थिएटर बिजनेस, नाउ दिस इज जस्ट आई मीन nobody actually is clear about it कि आगे चल के क्या होने वाला है. So when the theaters will be open, again वो पिकअप कर लेगा. कुछ लोग बोलते हैं डेफिनेटली पिकअप कर लेगा बिजनेस, एंड बिकॉज ये बड़े पर्दे का जो मजा है वो अलग ही है. So definitely people love to watch the film in theaters and not on a small screen. But apart from that, there is a convenience also. तो कुछ लोग बोलते हैं कि शायद ये एक नया ट्रेंड बन जाएगा कि थिएटर्स कम होते जाएंगे एंड ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर वाले पर्दे पे देखना पसंद करेंगे. सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है. बट हमारे लिए तो एक क्लियर बात है कि वर्किंग फॉर ओटीटी विल डेफिनेटली बेनिफिट यू. तो ओटीटी आने वाले टाइम का फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है. थिएटर्स फिर से पिकअप करेंगे क्या, ये अलग बात है, बट ओटीटी विल बी पार्ट ऑफ द फ्यूचर इंडस्ट्री, ये पक्का है. Acha, there is one more question. I wanted to know how was your experience working with Sumitra Tai, and she was an inspiration. Yeah, definitely. So, uh, uh, Sumitra, I used to call her Sumitra Maushi, and working with her was how I can express. I would say that I learned from her the entire filmmaking. Most of part, whatever I have learned, I learned from her. Because I started working with her in '96 when I was knowing nothing about films, and in my initial days I assisted her in direction. So उनका direction सिर्फ वो direction नहीं था. So she used to be very keen about all the departments कि art कैसे हो रहा है, या फिर costumes क्या हो रहे हैं, या फिर production कैसे हो रहा है, production कैसे handle हो रहा है, and of course on the framing and the lighting and the and the dialogue delivery, everything. So as a director she was really inspirational, because फिर से वहां पे वही एक important बात आ जाती है. She set the trend. उनके जैसे काम करने वाला उनके टाइम पीरियड में उन्होंने अपना प्लेस तैयार किया. she created her own space. वो ना ही उन्होंने सिर्फ बड़े कंपनी के साथ काम करने के बारे में सोचा, चाहे बजट कम हो, maybe with a less budget, very experimental content. Sometimes maybe some people rejected the script, but then also she made the film with some other resources. She keep on tapping various doors, and she actually explored various different ways. और उन्होंने अपने तरीके से अपने टर्म्स पे, she never compromised on the content. उनको किसी ने बोला ये ऐसे करके देखो, वैसे करके देखो, तो शायद आपकी फिल्म बिक भी जाएगी, मे बी इट विल बी सोल्ड आउट वेरी इजीली, कोई डिस्ट्रीब्यूटर आराम से ले लेगा. बट शी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन दैट फ्रंट. उनको जैसी चाहिए थी फिल्में, वैसे ही फिल्में उन्होंने बनाने के बारे में सोचा, वैसे ही उन्होंने फिल्म्स बनाई. एंड शी वर्कड ऑन various platforms. Like she worked on films, she worked on short films, she worked on documentaries, she worked on docudramas, she worked on television programs, she worked on television series, she worked on corporate films, she worked on the documentaries for NGOs. So आप देख सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम भी बात कर रहे थे, वो सारे अलग अलग जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारे अपॉर्चुनिटीज सुमित्रा मौशी ने एक्सप्लोर किए हैं. एंड शी वर्कड ऑन
all these formats, and very successfully she did that. तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि I always try to tell this thing to all my students कि फिल्म मेकिंग जो आप सीखते हो तो it's not only about learning in classroom. So one number you learn in classroom, number two you implement that in your exercises. So unless and until you do your project, आपका लर्निंग पूरा नहीं होता है फिल्म मेकिंग में. सो आपने आपके सर ने आपने मैम के ने आपको बता दिया, आपने लिख लिया, उसके नोट्स लिख लिए और आपने पेपर दे दिया, उससे आपको फिल्म मेकिंग नहीं आएगा. You need to implement that in your projects. Third thing, you need to watch lot of films which are recommended to you. सिर्फ आप मतलब कि मजा आता है, मुझे सलमान खान देखने का मजा आता है, मैं हर रोज सलमान खान की फिल्म देखूंगा, आप नया कुछ नहीं सीखोगे. देखिए, आप सलमान खान जरूर देखिए, या फिर और कोई आपका हीरो आप जिसके फैन है, अजय देवगन है या फिर और कोई है, टॉम क्रूज है, आप देखिए जरूर, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा होता है और वो भी देखिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न. तो अगर आप बाकी भी एक्सप्लोर करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, you need to understand about various aspects of life. मतलब कि आपको बाकी आर्टिस्ट भी किस तरह से काम करते हैं. मे बी इट्स अ म्यूजिशियंस वर्क, मे बी पेंटर किस तरह से काम करता है, पेंटिंग में क्या क्या हुआ है, पेंटिंग में इम्प्रेशनिज्म कैसे आया है, लिटरेचर में क्या क्या हुआ है, लिटरेचर किस तरह से लोगों ने एक्सप्लोर किया है, ये फलाना फलाना लिटरेचर को क्यों मानते हैं, क्या क्या है मतलब कि उसमें खास बात शायद. तो चाहे वो अरुंधति रॉय हो या फिर और कोई चाहे आप चेतन भगत पढ़ लो, बट लिटरेचर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या लोग कर रहे हैं, पेंटिंग में क्या हुआ है, डांस में क्या हुआ है, म्यूजिक में क्या हुआ है, स्कल्पटिंग में क्या हुआ है, होता है. सो दिस इज अबाउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड आर्ट फॉर्म्स. तो अगर इसका आपको एक्सपोजर आ जाता है तो आपका डेफिनेटली आपकी फिल्म भी बहुत बढ़िया बन जाती है, बिकॉज यू विल बी नोइंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो चाहे उसमें मार्क्सिज्म आ गया, चाहे उसमें फेमिनिज्म आ गया, चाहे उसमें अलग अलग एनवायरमेंटलिस्ट क्या बोलते हैं, सोशल इश्यूज अलग अलग क्या है, आज क्या चल रहा है हमारे आसपास और उसकी हमें क्या जरूरत है, क्यों कुछ लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ लोगों के बारे में उनका लाइफ किस तरह से चल रहा है. अब यू आर मे बी लिविंग इन अ वेरी पॉश अपार्टमेंट एंड यू विल बी लिविंग इन अ वेरी फैंटास्टिक कंफर्टेबल होम्स, बट व्हाट इज हैपनिंग टू योर सोसाइटी, व्हाट इज हैपनिंग टू योर सराउंडिंग, उसके बारे में अगर हमको मालूम ही नहीं है तो हम फिल्म किस बात की बनाएंगे. सो ये सारा मैंने सुमित्रा मौशी से सीखा. सो आई मीन इन अ वे अपने आसपास के बारे में, आपके आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में, उसके क्वेश्चंस के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना, ये भी हमको डेफिनेटली उनसे मिल सका. ओके, सो आई थिंक आई विल फर्स्ट stop here and then maybe we can take the next questions also. Definitely one more question is there, definitely. Yeah, from Rasika only, but first I would like to conclude my talk and then we can definitely go to question answer again according to the priorities. Okay, so Anand sir. Yes, sir. Sir, there are a couple of questions actually, but I think if you can answer those questions, that would be good. So, या सो एक यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं रसिका का पहले ले लेता हूँ. थॉट्स अबाउट थिएट्रिकल एक्सपीरियंस in a film, like for example La La Land was a whole musical film which was
some of the other theatrical component, right? Recently, a story film directed by Abhishek Chobe also had a theatrical. Risika, you are perfectly right. I mean, in my opinion, also there are some films which are having the components which can be explored in a better fashion in theater. तो थिएटर में उसका एक्सपीरियंस अलग ही आएगा. And if unfortunately, because of the pandemic, if this theater business is going to shut down in coming years, then we are going to lose a lot of things. And ये actually, चाहे आप उसको कमर्शियल एंगल से देखो या फिर दूसरे किसी एंगल से एक्सपीरियंस के लेवल पे देखिए, लोगों ने काफी कोशिश की है. Because when television came, people thought that television will dominate and the theaters will be shut down. So that time people came up with various ideas like चाहे 70 mm की आइडिया हो या फिर 3D फिल्म्स की आइडिया हो. 3D and 70 mm films, these are just the examples where the filmmakers were trying to create such an experience which audience will not be able to resist. कि ये फिल्म जो है मुझे वहीं पे जाके देखनी, ग्रेविटी जैसी फिल्म है, ला ला लैंड जैसी फिल्म है, वहां पे जाके ही देखना है आपको. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू वॉच इट इन थिएटर्स आपको वो मजा नहीं आएगा. ये फीलिंग क्रिएट करने के पीछे उसका कॉमर्स भी है. एंड अगर व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्रेन सेटर्स, तो ट्रेन सेटर्स में आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों की फिल्में थिएटर में रिलीज नहीं हुई. they couldn't release their films in theaters. तो मतलब मैं उनसे बहुत आइडेंटिफाई करता हूँ कि मैंने जो भी काम किया है उसमें काफी, उसमें से कुछ फिल्में उस तरीके से रिलीज नहीं हो पाई. रिलीज हुई भी तो मतलब ज्यादा देर तक वहां पे उसका बिजनेस नहीं कर पाई, बिकॉज उसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स है. थिएटर पे फिल्म चलाना इज नॉट दैट इजी. एंड तो क्योंकि आपको मासेस को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसमें एंटरटेनमेंट होगा तो मासेस अट्रैक्ट होगा. एंड बहुत बड़े लेवल पे थिएटर रिलीज आपको सक्सेसफुली मिलेगा. सो मैं ना उसका दूसरा एस्पेक्ट जानता हूँ, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि एक्सपीरियंस लेवल पे ये सब ठीक है. या आई मीन आई विल मिस कि थिएटर में फिल्में देखना वगैरह वगैरह मिस करूंगा मैं डेफिनेटली. बट व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक्स? सो मुझे इकोनॉमिक्स के लेवल पे ये लगता है कि मतलब सारी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स हमेशा से थिएटर रिलीज नहीं हो पाई है. लॉट ऑफ फिल्म्स आर देयर व्हिच आई वुड वॉच ओनली ऑन द स्मॉल स्क्रीन बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स अटैच्ड टू इट. तो उसको दो एस्पेक्ट्स है ऐसे मुझे लगता है. Yes, sir. Hello? या Yes, sir. There are two more questions, I think, in the chat box. इज दैट सो? Yeah. I couldn't see. I mean, yeah, please. Can you read? Can I read them out, sir? Yeah, sure. Do you feel COVID has proved a boom for OTT and resulted in shutting PVR business? ये मैंने ऑलरेडी दे दिया आंसर. Yeah. Okay. So I think हो गए है, sir. Actually, I was not on the. सर ऍक्च्युली मी विचारत होते की मराठीत विचारलं तर चालेल का? हो चालेल. तुम्ही जे उत्तर दिलं तोही माझा एक ऍस्पेक्ट होताच. प्लस मी विचारत होते की म्हणजे मी पर्टिक्युलरली रे बघितल्यानंतर हे बघितलं की म्हणजे अभिषेक चौबेनी काही ड्रामा मधले कंपोनंट्स पण पिक्चर मध्ये वापरलेत. म्हणजे जो मोन्टाज हा प्रकार आहे किंवा आपण ड्रामामध्ये काही गोष्टी टाइम बाउंड मुळे दाखवू शकत नाही आणि फिल्म मध्ये त्या आपण टाइम लॅप्सने वगैरे दाखवू शकतो. पण त्यांनी पर्टिक्युलरली आपण नाटकात ज्या गोष्टी वापरतो ना तसं रिप्रेझेंटेशन फिल्म मध्ये केलं होतं. सो हा पण एक वेगळा प्रकार म्हणू शकतो का, हे मी ऍक्च्युली मला विचारायचं होतं. डेफिनेटली आहे तसा प्रकार. आय मीन पीपल ऍक्च्युली म्हणजे मी मराठीत बोलण्यापेक्षा हिंदीत किंवा इंग्लिश मध्ये उत्तर देईन म्हणजे बाकीच्यांना पण कळेल. येस सर, काही हरकत नाही.
So, Rasika, you were talking only, Rasika. येस येस सर. So, can you give me one example you're talking about? I mean, the theatrical component in the film Rai. रे मध्ये मराठीत बोललं तर चालेल ना सर? हो हो हो. हा, रे मध्ये ऍक्च्युली जी अभिषेक चौबेने डिरेक्ट केलेली स्टोरी आहे गजराज राव आणि मनोज वाजपेयीची, हम्म. त्यात त्याला ती क्लेप्टोमिनिया म्हणजे ती सिम्बॉलिक स्टोरी आहे, त्यांनी क्लेप्टोमिनियाचा रेफरन्स घेऊन ती कम्प्लीट केली आहे. बर. त्याच्यात तो सांगत असतो आणि त्याला ते देजावू होत असतात की आपण ह्या व्यक्तीला आधी भेटलोय, आणि तो त्याला घड्याळ दाखवतो एक प्रकारचं, आणि तो सांगतो की ह्या घड्याळामुळे तुझं नशीब बदलेल, आणि त्या घड्याळाला घेऊन त्यांनी एक मोन्टाज क्रिएट केलाय. त्याच्यात काय म्हणतात म्हणजे थिएटरमध्ये आपण गोष्टी चेंज होण्याला कसे मोन्टाजेस क्रिएट करतो ना, तसा त्यांनी एक तो मोन्टाज क्रिएट केलाय साधारण 3-1 मिनिटाचा. त्याच्यात बर. तो हुरळून गेलाय किंवा तो त्या गोष्टीत बुडालाय हे त्यांना दाखवायचं होतं, की तो कन्व्हिन्स झालाय की या घड्याळाने माझं आयुष्य बदलणार आहे. सो ती पर्टिक्युलर गोष्ट एखाद्या फिल्म मधल्या डिजिटल ह्याच्यात पण दाखवली गेली असती, पण त्यांनी स्पेसिफिकली नाटकातल्या गोष्टी वापरल्या. ते मला खूप अमेझिंग वाटलं म्हणून विचारलं मी, बाकी काही नाही. ओके, आय एम रिअली सॉरी की मी राय जरी बघितलं असलं तरी मी सगळ्या स्टोरीज नाही बघितलेल्या. ओके. त्यामुळे ही स्टोरी मी नाही बघितलेली आणि Okay. मला ती बघायला पाहिजे आता, आणि त्यामुळे मला एक्झॅक्टली कळत नाहीये की व्हॉट यू आर टॉकिंग अबाउट. Sure, sir. No problem. So unless and until I watch it, it will be very difficult. But in general, what I can tell you or all the students that people try to experiment with the medium, and they experiment fantastically. So what Rasika is whatever talking about, I haven't seen that film, but Rasika, I would like to mention here that montage concept is there in films also. So Okay. maybe you are referring to something else which I have not seen. Maybe. So Yeah. current montage ही concept basically films मधूनच आलेली आहे rather. Okay. या थिएटरवाल्यांनी ती नंतर वापरायला सुरू केली. थिएटर आणि फिल्म्स मध्ये खूप एक्सचेंजेस झालेले आहेत. जसं की मिझॉन सीन ही कन्सेप्ट ही थिएटर मधून फिल्म मध्ये आली आहे, परंतु मॉन्टाज ही कन्सेप्ट फिल्म मध्ये होती, ती फिल्म मधनं थिएटर मध्ये गेली, कारण स्पेस आणि टाइम या गोष्टींचा सॉरी आय शुड बेटर टॉक इन इंग्लिश. सो द स्पेस अँड टाइम which can be utilized in films is a very different aspect of storytelling, and which was not there in theaters, because in theater what happens is actually the space can be changed only with certain aspects. Otherwise the space and time cannot be changed very easily. So but in films it's very easy to change space and time. You can intercut between two spaces. You can actually use different spaces, and you can join them together to form a very different kind of scene. So all these experimentations are possible in films, and so these experimentations happen in films, and which influenced a lot on theater also. So ये दोनों साइड से exchanges हुई है. So I will thank you Rasika for pointing out that particular scene. So I will definitely watch it. Yeah, any other questions? Yeah, would like Yes, to. Sir. Yeah. So there is a genre in the film called offensive comedy or sarcastic comedy, but people nowadays are too offensive or not able to understand such kind of comedies. So how it affects to the films like Dictator, if the film is released in contemporary time, or the creators wanted to make films like Dictator, how the people's reaction are affected to that creators? Okay. No, Mayur, actually, you are right. I mean, we are living in different times, and each and every time period has its own, I think, limitations and benefits. So right now, the situation all over the world is in a way very sensitive. People are becoming very sensitive about their
sentiments and their concerns. So when we say comedy or sarcasm, that should be used with due respect. If we can utilize it with due respect to other people, then maybe there is a chance that some people might digest it. But again, there is a possibility that people might object on it. उसके बारे में कुछ ना कुछ आएगा. अब take example, forget about sarcasm and all. Just take example of Padmavat. What happened to making of film Padmavat? So even आप एक प्रोजेक्ट करते हो किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को, उसमें भी काफी सारे ऑब्जेक्शंस लिए जा सकते हैं. इसका मतलब ही बहुत सिंपल है. इसका मतलब ये है कि पीपल टेक फिल्म्स वेरी सीरियसली. और ये सीरियसली क्यों लेते हैं? बिकॉज दे नो दैट इट कैन इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ पीपल. ये सब होता क्यों है? क्योंकि पीपल नो दैट दिस इज अ मीडियम विच इज एक्चुअली दिस कैन इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ पीपल. और फिर जो हमारा जो इमेज था वो खत्म हो जाएगा, वो बदल जाएगा, लोग कुछ अलग ही समझेंगे वगैरह वगैरह. तो इसका मतलब ही क्लियर है कि ये मीडियम कितना पावरफुल है एक्चुअली. बट when we will make a film, we should be number one, we should respect others. Number two, we should be responsible enough. sarcasm आप जरूर यूज करो, कॉमेडी आप जरूर डालो, या फिर आपको क्रिटिसाइज करना है क्रिटिसाइज भी करो. But I always think that we should be responsible for whatever thing we are creating. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हमेशा लेनी चाहिए. तो आपको चाहे फूल मिलेंगे या पत्थर, यू शुड बी रेडी फॉर दैट. तो आपको फूल लेना है, पत्थर लेना है, या फिर जो भी लेना है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहो, आप तैयार रहो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you. Virendra sir, I have a question. Yeah. Okay. Sir, how can students make use of the film school better? Because there are a lot of people who directly join the film industry and they learn from it. So how can a film school make a difference for the students and make a very good filmmaker ultimately? Yeah, this is actually very very important, because what happens is जो directly लोग आए हैं ना, the people who have not studied in film school, who directly joined the industry, they took a longer time to understand various processes. They took a lot of time and they invested a lot of energy to learn certain things on sets, या फिर in the process. A lot of people learned in the process, but it takes longer time definitely. And secondly, you should be in a good hands. तो ही मतलब if you are working on a television set, you are you might become skeptical about certain things, because you know कि आप मतलब कि the people who are mentoring you in a way, the directors over there or the production house over there will be working with a particular intention, and then it will be very dicey, that you might pick up some wrong roads and maybe the wrong practices. So in film school, what happens is film school will give you a formal training about certain things, and that formal training will definitely help you, because जो भी आपको गलतियां करनी है, whatever mistake you want to make, you are in a way given an opportunity to make mistakes as a student, because there are mentors to guide you, there will be teachers to guide you, there will be people who will be helping you. All the people around you are not expecting money from you to help you. And फिर क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स मिलके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स का ही वो अपना काम होता है, उसमें कमर्शियल कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं है, पैसे का सवाल नहीं आता है. एंड सो आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करके देखना है,
आप देख सकते हो. सो आपको एक्सपेरिमेंट निकाल के आप पर्दे पे देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि ओ दिस डिडंट एक्चुअली वर्क आउट वेरी वेल व्हाट आई वाज थिंकिंग, बट या दिस वर्क वेरी वेल. तो ये जो चीजें हैं, ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग आपको फिल्म स्कूल में मिलेगा. बिकॉज इफ यू वांट टू डू दैट इन एक्चुअल इंडस्ट्री, मे बी योर प्रोड्यूसर माइट से दैट बॉस, मतलब अपना मतलब ये जो ये है ना, इसी तरह से जाना चाहिए, यही करना पड़ेगा आपको, बिकॉज मैं पैसे लगा रहा हूँ. सो वहां पे देर विल बी वेरियस डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स which might not be able to, I mean, which you might not be able to experiment with the medium, जो कि आप फिल्म स्कूल में कर सकते हो. दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. सो एक मेंटोरिंग का हो गया, फॉर्मल ट्रेनिंग का हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन का हो गया, और एक चीज है जो कि यू विल गेट सर्टेन टाइम टू स्टडी फिल्म्स. तो आपको टीचर्स रहेंगे, फेलो कलीग्स, आई मीन स्टूडेंट्स रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, who might be giving you company to watch lot of world cinema, कि ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, अरे ये डायरेक्टर का काम देखा है क्या, ये कैसे करता है, वो क्या उसने ये फिल्म में कैसे किया है. So lot of discussions can happen, and that you can question to your mentors and your teachers also. So lot of learning can be possible, I guess. Sir, one more question. So, what should be the approach or the attitude of the students, and what all are the responsibilities of the students during their course of filmmaking period when they are studying? Yeah. So what I think is actually the role is should be very clear that they are students. So if you are open, I mean, what happens is generally, especially about filmmaking and especially about direction. Uh, so uh, so people think that they already know. I mean, they know a lot of things. So first important thing is we should become empty to learn more. So वो पहले निकाल देना पड़ेगा. So you have to come out of your whatever baggage you are having. So come out of the baggage, try to learn whatever is possible. That is important. Second thing is, let's make use of whatever we are getting. So the equipments we are getting, the camera we are getting, the resources we are getting, it will not be available for you after your course. Maybe you will have to pay a lot to get all these things when you will be in the industry. So let's be grateful to that and let's make use of that. कि मतलब आपको बोला जा रहा है कि मतलब यार शूटिंग कंप्लीट करो 2 दिन में, and you're not able to utilize the equipment, you're not utilize the time, you're not able to utilize. So that will be in a way your loss. So if you're not completing your projects, if you're not completing your assignments, if you're not completing your films in time, and not making use of the resources you are having, it will be your loss. So I think if we can make use of these things properly, then it will be great learning, and that will be a great opportunity as a student. Thank you so much, sir. Anyone got any questions? Okay, sir. I think you have answered all the questions. Yeah. So yeah, if anyone wants to ask me a question in any language Yeah, that I understand, so unless you speak in Malayalam, so Anand sir will definitely translate it for me. But definitely. and you can talk to me in Marathi, Hindi, English. So any question? Just wait for 5 6 seconds. Yeah. So don't be hesitant, be open, and whatever you feel like asking, you can definitely ask. Okay, I think we'll just wind it up.
Okay. So thank you so much, sir. Actually, it was a great session and it was very informative and knowledgeable for even us, me and Sani. Sani was also a part of this, and yeah, she did not have the headphone, so she couldn't hear it properly. Okay. I hope you also had a good time because I know your passion is teaching. So yeah, definitely, it was a great experience for me, and I loved interacting with these students, and some of the students definitely asked questions also, and it was I mean fun for me to share my knowledge and share my whatever views. So thank you for inviting me, Anant Yeah. and TMB. So first of all, let me thank you. Let me actually first of all thank our department for making this moment happen. Actually, for this webinar to happen, and I want to thank first Geetali ma'am, our HOD, and our colleagues, and Saniga ma'am. She was also part of this actively for everything. And above all, thank you so much for. I extend my gratitude to you, and during your busy time and everything, actually you found some time for us to actually share your great information, knowledge, and everything. And thank you so much for this opportunity. And students actually, thank you everyone for your time and being very active and being participating in this session. Thank you so much. Thank you. Yeah. Bye. Bye, sir.